अब बताओ जरा हाथ से। ये ना यहाँ से मतलब जैसे कि ये यहाँ से मतलब यहाँ से हो ना थोड़ी बस वो 3 लेयर जो डैमेज हुआ परसों कल भी ओपन रखोगे भैया? हाँ क्योंकि कल तो होली खेलने वाले बहुत आएंगे ना, कलर लेके बाल लोगने वाले बहुत आएंगे। हाँ ऐसे हाथ में रखता हूँ। पहले नहीं खेलते थे लेकिन आजकल की होली कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। के लिए होता है या मतलब परमानेंट स्ट्रेट डाल रखा आपने? परमानेंट होता है। फिर तो ठीक है, आके देखो वहाँ पे करा तो स्ट्रेट ही तो सोच रहे थे ये स्ट्रेट कराना है। बहुत बढ़िया। क्या प्राइस है स्ट्रेट कराने का? आपकी लाइन का आ जाएंगे 3000। अच्छा वो रिमोंडिंग की है शायद से? रिबॉन्डिंग भी है और भी है, उसका और कॉस्टली है रेट। रिमोंडिंग नहीं आता होगा फिर वो? एक रिबॉन्डिंग से अलग भी है। तुम कलर वगैरह तो नहीं लगाते ना? नहीं भैया नॉर्मली होंगी मेहंदी वगैरह, मैं कलर यूज नहीं करती कभी। ये है नैनो फ्लैशिया। हमने स्ट्रेट वालों का भी डाल रखा है वीडियो उसमें कह रहे। हाँ मैंने तो बहुत सारा है डाल रखे हैं। एक लेडी की परमानेंट स्ट्रेट करा ना, स्ट्रेट बाल अच्छे लगते हैं। आपको तो बालों की जरूरत भी है, आपको करा लो। पहले कभी कराया कुछ तुमने? नहीं भैया ये ऊपर नीचे हो ही रहता है। ऊपर नीचे हो ही रहता है। पहले दीदी ने ब्यूटिशियन कोर्स किया था जब छोटे में करते थे। बाकी मेरे 2 मुँहे बाल हो गए थे ना वो टाइम, तो मैंने नीचे गए ना दो मुँहे बाल होते हैं ना, ये जरा जरा से निकाले थे। हाँ करा लो आप, अच्छे कभी मेहंदी करवा लेती हूँ घर में होने से।
Navy said, ठीक है छोड़ दो हाँ हाँ वो चीज़ तो ऐसे ही है फिर तो हरीश मान
देखो आप